Hello everyone. Today we would be discussing Fire and Ice, class 10th की एक poem. अब I know boards around the corner थोड़ी सी टेंशन बिल्डअप होगी. तो उस टेंशन को थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए I decided to make this summary more like a detailed explanation so you can get an idea what Fire and Ice is all about. Fire and Ice is a short poem written by Robert Frost. Through this poem, Robert Frost wanted to convey the destructive forces in the world, जिसको इसने दो फॉर्म्स में क्लासिफाई किया था एंड इनको फायर एंड आइस की टर्मिनोलॉजीज से रिप्रेजेंट किया था. सो लेट्स स्टडी फर्दर. अब द समरी ऑफ फायर एंड आइस. आई मीन I'll be honest. जब मैंने पहली बार ये पोम स्कूल में की थी एंड आई वाज लाइक कि तो दो स्टैंजा की पोम है, इसमें क्या क्या ही होगा. But later on, when I found out कि what Robert Frost wanted to convey through this poem, it made me realize कि हाँ, this is actually a poem that connects with, all the type of destructive emotions that are present in the world. एक बार summary समझ आ गई ना, तो it makes it easier to write down our answers too. So let's begin. Robert Frost's poem is first of all rich in symbolism. सबसे बड़ा symbolism इस chapter का इसका name ही है, Fire and Ice. Fire and Ice दो contrasting destructive forces को डिपिक्ट करने के लिए यूज किया गया था. अब फायर जो है वो एक्सट्रीम इमोशंस को डिपिक्ट करता है, जैसे कि लस्ट हो गया, एंगर हो गया किसी की तरफ, क्रुएलिटी, वॉयलेंस. अब ये ऐसे इमोशंस है ना दैट कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन वैल्यूज, जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज हैं जैसे काइंडनेस एंड स्टफ. इन जो ये जितनी भी ह्यूमन वैल्यूज हैं, इट कैन डिस्ट्रॉय दीज ह्यूमन वैल्यूज एंड इवन लीड नेशंस टू वॉर्स. क्योंकि एंगर और क्रुएलिटी तो ऐसे इमोशंस हैं दैट आर द मेन रीजन फॉर वॉर्स. अब आइस की बात करें, आइस जो हमारे जितने भी कोल्ड इमोशन हो गए, जैसे जेलसी हो गया, हेट्रेड हो गया किसी की तरफ, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी. अब इनडिफरेंस इनसेंसिटिविटी वही हो गया कि यू आर नॉट एक्चुअली केयरिंग अबाउट वट एवर हैज हैपनिंग अराउंड यू, एंड दिस कैन एक्चुअली मेक द ह्यूमन हार्ट स्टोनी एंड कोल्ड. अब ये दोनों इमोशंस आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड. फायर है वो थोड़ा जल्दी एक्ट करेगा, आइस है इट वर्क स्लोली. ये जेलसी भी होती है, जेलसी या हेट्रेड किसी की तरफ धीरे धीरे करके आता है, बट एट द एंड इट बिकम्स सो पावरफुल कि आप उसको एक टाइम के बाद अवॉइड नहीं कर सकते हो. This poem is actually an appeal to control these destructive emotions, to preserve humanity and maintain peace. But Robert Frost he emphasizes the oneness of mankind and the need for love, harmony, and mutual coexistence. And at the personal level, this obsession with greed, lust, or hatred destroys inner peace and life's charm. This poem serves as a warning that unchecked negative emotions can harm both individuals and society. Now, the thing is, in case you have noticed in these points, appeal, oneness of mankind, mutual coexistence, these are like the keywords of the poem. What I personally feel na English mein, the most important thing that matters is how you present your answer. Sure, everybody might know the summary of the poem. हर किसी को कुछ ना कुछ पता होता है poem का, and they write it down in the examinations. But the one who gets the most mark is the one who has written the answer effectively. Like what I used to do whenever I used to write an answer, I used to underline the keywords that I've chosen for that particular answer. अब ऑब्वियसली अगर आप एक 3 मार्क का लिख रहे हो या फिर आप एक 6 मार्क का लिख रहे हो, तो आपकी वर्डिंग्स और आपके प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आएगा और आप उस हिसाब से कीवर्ड्स यूज करोगे. बट रियली प्रेजेंटेशन डज प्ले अ गुड रोल इन योर एग्जाम्स.
अब लाइक जो पॉइंटर है, द पोम सर्व्स एज अ वार्निंग, तो या यू कैन मेंशन इट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कि हाँ द पोम इज सर्विंग एज अ वार्निंग दैट द अनचेक्ड नेगेटिव इमोशंस कैन हार्म बोथ द इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी। ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, इट्स द इंडिविजुअल दैट इज गेटिंग अफेक्टेड एज वेल। Now about the poem. Again, here this is a short poem with two stanzas. It explores the two possibilities of the world's destruction. Fire and ice हैं that are used both literally and symbolically. Literally is like अगर हम लोग symbolic meaning को side रख भी दें, literally ice अगर पूरी दुनिया में फैल गई तो इतनी coldness फैल जाएगी कि at the end that would lead to the extinction of the world. एंड सेम विद फायर, अगर ग्लोबल वार्मिंग एक्सट्रीम लेवल पे हो गई, सब कुछ ग्लेशियर्स मेल्ट हो गया एट द एंड और इतनी हीट हो गई, of course nobody would be able to survive in that type of climate. So that is the literal meaning. And symbolically fire, again we had just done it previously, fire is used to symbolize the violent passions, desire, और जो ice है that is used for hatred, indifference and jealousy. Now we'll be talking about the mood of the poem. Firstly, it's gloomy. Gloomy is another word for sad. A gloomy is here because it reflects the destruction and the end of the world. Second, reflective. Reflective is here because it encourages the readers to understand about the human emotions and try to control these negative emotions. Third, threatening. Sense of looming danger कि हमें बता रहा है कि if these emotions are not kept in check then it can actually eventually lead to the destruction of mankind. And ये जो short lines है ना, they help in deep reflection. Reflection का मतलब है it's like it's putting us into a thoughtful process कि हाँ that eventually leads to us to think about it, कि हम सोचने लग जाते हैं कि सच में ऐसा हो सकता है. That's why short lines allow deep reflection. Now, if we talk about the tone of the poem, firstly, matter of fact. Matter of fact इसलिए because it presents fire and ice as simple truths. Directly अगर हम लोग English में भी कभी use करते हैं, it's just a matter of fact कि that is like it's just the truth. You cannot change anything about it. Second, resigned. Resigned इसलिए because we are eventually accepting the inevitable destruction that can happen due to these negative emotions. Third is like the detached observation without emotional embellishment. अब embellishment एक like कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बता देना, elaborate types. यूजुअली क्या होता है, इमोशनल एम्बेलिशमेंट है मीन्स कि अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग आप किसी चीज को पोर्ट्रे कर रहे हो, बट नो, here what the poet has done, he has kept a detached observation without emotional embellishment. उसने अपना ओपिनियन नहीं वो किया इमोशनली कि हाँ दिस हैपेंस बिकॉज इट वॉज हिज पर्सनल थॉट कि उसने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया बात को थोड़ा, बट इंस्टेड ही केप्ट अ डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन कि जनरली वर्ल्ड क्या सोचता है इस चीज को लेके. Now, there were a few things I wanted to explain using a few phrases of the poem. The first is, some say the world will end in fire, some say in ice. Now, this is actually, a matter of fact opening. यानी कि it's just said so straightforward कि unemotional कह लो या कि हाँ that is actually there कि some say the world will end in fire, कुछ लोग कहते हैं the world will end in fire, some say in ice, the others think कि world will end in ice. So this is a matter of fact opening that is said directly straightforward. अब अगर हम बात करें सेकंड पॉइंटर की, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिव मूड. यहाँ पे द पोएट इज ट्राइंग टू से ही इज लाइक थिंकिंग या ही इज एक्चुअली सजेस्टिंग व्हाट ही इज फीलिंग राइट नाउ, लाइक मोर लाइक थिंकिंग ओनली कि वट एवर आई नो फ्रॉम वट I have tasted of desire. Like what I want to think, what I think is like I would hold with those who favor fire. He personally feels if fire would be the first thing that would end the you know the entire world.
Third pointer is like, but if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. This is actually resignation to human nature's destructiveness. So he's like, firstly, he was saying, ki, हाँ, I hold with those who favor fire. The first thing the poet feels would end the world is all the fiery emotions present in the world. But he's like, if I had to perish twice, like अगर दूसरी बार world को end होना होता, कि ice is also a very powerful emotion that would lead to the destruction of human mankind, कि वो भी काफी ही होगा दूसरी बार पेरिश करवाने के लिए वर्ल्ड को. So this is like a resignation to the human nature's destructiveness. कि resignation basically means कि मान लिया हमने कि human nature's destructiveness is such a thing, like ये emotions are so powerful that they can easily cause harm to the world. अब अगर हम लोग थीम ऑफ द पोम की बात करें तो द वर्ल्ड फेसेस टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, फायर एंड आइस. अब लाइक आई मेंशन अर्लियर, इसके दो मीनिंग्स हैं, एक लिटरल मीनिंग और एक सिंबॉलिक मीनिंग. लिटरल मीनिंग इन इटसेल्फ इज लाइक, अगर हम लोग सिंबॉलिक मीनिंग को एक सेकंड के लिए साइड कर लें और इनके एक्चुअल मीनिंग ले लें, कि जैसे फायर यानी ग्लोबल वार्मिंग, या फिर आइस एक्सट्रीम कोल्ड. अगर ग्लोबल वार्मिंग या फिर एक्सट्रीम कोल्ड हो तो ऑब्वियसली देयर इज नो चांस कि ह्यूमैनिटी सरवाइव करेगी. एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स आर नॉट सुटेबल फॉर एनी लाइफ टू सस्टेन. अब अगर सिंबॉलिक मीनिंग की बात करें, the fire stands for anger, lust, cruelty, passion. Ice, hatred, jealousy, indifference, coldness. तो ऑब्वियसली फायर जितने भी फियरी इमोशंस है उसको सिग्निफाई कर रहा है, आइस जितने भी कोल्ड इमोशंस है उसको सिग्निफाई कर रही है. एंड ईदर ऑफ दीज इमोशंस अगर एक्सेस में हो, दे कैन easily destroy humanity. Now, the message that the poem wants to convey is, first of all, rising emotions like anger, greed, lust, and hatred can lead to destruction. Both fiery and cold temperaments are equally dangerous. Emphasizes the need for controlling extreme emotions, warns mankind to be aware and mindful of human feelings. Obviously, I mean, अब हम लोग फर्स्ट चीज से स्टार्ट करें, जैसे हमने प्रीवियसली हम लोगों ने पूरी पोम में यही तो पढ़ा है कि जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. अब चाहे वो फियरी इमोशंस हो जैसे कि जेलस, सॉरी, जैसे कि एंगर या फिर लस्ट या फिर वॉयलेंस या फिर कोल्ड टेम्परामेंट्स हो, बोथ आर इक्वली डेंजरस. अब it also, the poem is actually giving us a message that we need to control these extreme emotions in order to maintain the peace and harmony in the world. And now again it's like warning mankind. ये poem हमें warn करती है to be aware and mindful of human feelings and try to suppress या फिर try to control these emotions, negative emotions, as much as possible. Poetic devices. Now, if we talk about the poetic devices, the first one I would like to discuss is metaphor. A metaphor is like a comparison being made. जैसे fire and ice here represent human emotions. अब अगर alliteration की बात करें तो जो first consonant, जो sound होती है first, जैसे consecutive words की जो sound होती है, if that is being repeated, then that is an alliteration. जैसे some say, so. That is an alliteration. Now there was one more thing I would have liked to discuss right now. कर ही लेती हूँ. I think many of us would have studied Tiger in the Zoo right by now. I'll make a video on that also. वहाँ पे एक word in the poem, concrete cell. Now many of you might like think, yeah, that's an alliteration too, because both the words start with C. But the truth is that is not an alliteration because sound repeat होनी चाहिए, not the letter. K and S, concrete cell, K, so. These are two different sounds. So you cannot put that in alliteration just because the letter is the same. Now next is imagery. Imagery is like a vivid depiction of the fire and ice. जैसे हमारे हम लोग कोई नॉवल या कुछ भी रीड भी करते हैं ना,
तो हमारे माइंड में ना एक विजुअल डिस्क्रिप्शन बन जाता है अबाउट ओके दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। तो हमें इस पोम में भी vivid description of fire and ice मिला, so that in itself is an imaginary. Coming to the conclusion of this poem, हमने क्या क्या सीखा अभी तक इस पोम में? कि पहली बात, it's a short but profound poem. दूसरा, it highlights the destructive power of human emotions. तीसरा, it encourages reflection on controlling passions and hatred. Obviously, अगर हम लोग थोड़ा बहुत अपने emotions के ऊपर reflect करते हैं, so that eventually leads कि हाँ हम लोग instantaneously react नहीं करते. Now last, timeless message for humanity. ये एक ऐसा मैसेज है that would go on throughout the world. I mean, humans have to learn how to control their negative emotions, is what this poem is trying to portray. Now since the explanation part is over, I would like to conclude this with just a few key points for the board exams, especially related to this chapter. अभी तक, after the explanation, we all should know what do fire and ice symbolize. Firstly, fire symbolizes desire, passion, anger. Ice symbolizes hatred, jealousy, indifference. And after that, we should understand the symbolic and literal meanings. दोनों हमारे fingertips पे होने चाहिए. उसके बाद आपके आंसर फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि इज इट कमिंग एज अ 6 मार्कर या 3 मार्कर या फिर एन आरटीसी. um quotes can be used to support answers. Relative quotes only. जैसे 6 markers में when you have to write a lot of content, so to give a better and more efficient answer, you can write quotes that support your answer. Only and only relative to the context. Again I'm repeating, मत लिखने quotes नहीं लिखने हैं, मत लिखो. I am just saying it can, if you want to you can, but बिल्कुल related होने चाहिए. किसी out of context में compare करके दोगे तो it won't gain you any marks. And later, short clear explanations जो हैं that are prefer for the 3 markers कि हाँ they need stories, stick to the word limits and stuff, but इतना भी नहीं कि कुछ पूछा है आप पूरी ही समरी लिखाओ चैप्टर की, दैट वोंट वर्क. आई मीन जो पूछा जाए उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको एक लाइन लिखनी है समरी की, 2 लाइन लिखनी है, लिखो, बट एक्सप्लेन व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. पूरी समरी लिखोगे तो ऑब्वियसली देयर वुड बी डिडक्शन ऑफ द मार्क्स. Now that was it from my end. The thing is, I know board exams का time है, तो थोड़ा सा stressful माहौल बन रखा होगा. And I relate with each and every person who is watching this video. I really wish you all best of luck for your board exams. And I really hope you guys score splendid in your English exam. If you have any doubts or anything you want to ask, please write down in the comment section below. I'll respond to them as soon as possible.